वेलकम टू आईबीए पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं आईबीए के करिकुलम के बारे में। सो वी हैव सम स्पेशल गेस्ट विद अस ऑन दिस एपिसोड। हमारे साथ सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड पे आमना इस्लाम है एंड देन वी हैव मानूर मुअज्जम खान। बेसिकली जब आप आईबीए आना चाह रहे थे, व्हेन यू वर प्लानिंग टू कम कि मुझे आईबीए ही जाना है, तो व्हाट डिड यू प्लान कि मतलब यार क्या माइंडसेट है कि यार आईबीए के प्रोग्राम में क्या होगा, क्या माइंडसेट रहेगा, मतलब और अब प्रोग्राम में आने के बाद। आने से पहले क्योंकि मैं साइकोलॉजी मेजर हूँ तो आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, लेकिन आने से पहले परसेप्शन ये था कि यहाँ से जो है ना ऐसी पढ़ाई नहीं होगी जो बाकी यूनिवर्सिटीज से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक बहरिया या कराची यूनिवर्सिटी विच आर वेरी लाइक साइकोलॉजी सेंटर्ड ना, बट ऑनेस्टली आई फील लाइक माई डिग्री इज इम्प्रूविंग अ लॉट. Okay, I feel like myself as well. Like I was not lean towards the idea of coming to IBA. That was never the plan. Like I feel like great for those people whose first preference is IBA. Like respect to those. But like my preference, like I think IBA was probably like kind of like last on the list. But then I was supposed to go to Canada because most of the people from my college that I was part of, like Lyson, they all ended up going to Canada. I even got like nominated for a scholarship, but then COVID hit. My parents were very paranoid. We're like, oh, like maybe you can complete your bachelor's from here, go abroad for your masters, which obviously like does make a lot of sense as well. But then again, like after I came to IBA, like I did see it's not that bad of a place to be. But then I feel like I'm the kind of person that if I'm given like an opportunity, I try to make like the most of it. So I feel like I've tried to make the most of my 3 years at IBA so far, and that's what I intend to do as well. And that's why I am like kind of liking, and I think I like the way like accounting and finance has usually like been for me so far. राइट, तो आई टेल यू बिकॉज यहाँ हम दोनों प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोशल साइंस और बिजनेस स्कूल को। अब मैं यहाँ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आफ्टर 4 years एट आईबीए मैं ग्रेजुएट हुआ। आई वाज वाचिंग अ फिल्म, मैं और मेरे दोस्त फिल्म देख रहे थे एंड वहाँ कोई एक टेक गीक नज़र आता है और वो कुछ करता है हैकिंग का। एंड और हैकिंग करके वो जो काम करना था वो तो कर लेता है, मगर उसके बाद मुझे मेरा दोस्त मुझसे पूछता है, यार फान तुम भी सीएस हो ना? मैंने बोला हाँ। तो यार समझ आई क्या किया यार, तुम कर सकते हो? तो मैंने बोला भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसने किया क्या है, ये तो करने की बात है, दूर की बात है। Like I'm trying to program that. तो when and I started thinking, यार मैंने जब when I wanted to do CS, I wanted to be that geek kind of a guy who could do hacking like this. And मैंने जब 4 साल के बाद I put myself in retrospective, मेरे साथ तो धोखा हो गया यार। मैं तो क्या समझने गया था, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ 4 साल बाद। तो 4 साल बाद ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको कि यार हम जो करने आए थे ये तो हुआ नहीं यार अभी तक। बट व्हाट डू यू थिंक? अल्लाह ना करे, लेकिन आई फील लाइक अगर आएगी तो पोटेंशियल है शायद आ जाए. I feel like likewise for me, maybe मेरा तो एक point आ चुका है where I think like I went to KPMG to like intern recently, and there was this guy, like I think he was like a very like senior like designation like manager at KPMG, and like he asked me like this very like finance intensive question, and that's where I started questioning whether my degree has really taught me anything or not, and I was like, am I really learning anything here? मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रेडिंग? मतलब आपको इसलिए शायद नहीं कर रहे क्योंकि व्हाट डू यू थिंक आवर ग्रेडिंग सिस्टम इस तरह? एंड डेफिनेटली एसएस में एंड बिजनेस स्कूल में डेफिनेटली ग्रेडिंग एंड टेस्ट एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। मतलब व्हाट डू यू थिंक ग्रेडिंग सिस्टम पे क्या सवाल निशान है? I feel like, okay, so this might be like my personal opinion, but coming to my 3rd year, I realized that grading is solely entirely dependent on the teacher that you take for that like course, right? Especially at IBA. I think this is the case for most universities as well. I've had conversations with people, but like in my first or second year, I was not very inclined towards like the idea of like having like perfect enrollment. I was like, it's fine, like I know I'm smart, like I can do well in like any teacher that I'm getting. But then I realized like after coming to 3rd year, when I had like a perfect enrollment, I was like, oh, like why did I not have perfect enrollment last semester? I should have actually fought for the best teachers, because right now, had that been the case, my GPA would have been like a solid 3.8. So I personally think like हमारे पास ये conflict होती नहीं because हमारे पास professors ही limited है Oh, हमारे program में, तो okay. हमें enrollment का फिक्र ही नहीं होती, Yeah, जो मिल रहा है बस मिल ही yeah. जाए. Also, I feel like relative grading courses are generally like so much better than Right, absolute right. grading courses. say हाँ definitely, but I'll tell you about math and computer science क्योंकि definitely business assessment different, but computer science में I feel it's a different subject altogether क्योंकि आप है ना you are in programming, आपके practicals होते हैं, actual practicals होते हैं जहाँ आपको लिखना होता है code. And the problem with IBA at this point is that I am not saying कि मैं कोई best coder था.
at my time. I'm not the best person there, and when I was giving this exam of data structure, और एक example है बहुत ही interesting कि मैंने exam देने गया, I gave this exam, I had this question in front of me कि ये अब मुझे पता है कि यार मुझे इस सवाल का जवाब आता ही नहीं, and now what I'm going to do, और जो मैंने किया, मैंने बताया कि यार मैं skeleton बना देता हूँ उसका, ऊपर से सारी चीजें लिख दूंगा, किसी ने चलाकर क्या ही देख लेना है, और मैं and after I built that and I said कि यार चलना है ही नहीं, इससे चलना है ही नहीं, मर के भी नहीं चलेगा, लग रहा है कि चलेगा, हाँ लग रहा है चल रहा है, and at the same time my friend who was solving this problem वो solve करने की कोशिश कर रहा है, करे जा रहा है, and then eventually जब हमारे grades आते हैं for a code that I'm pretty sure वो कभी भी नहीं चल सकता था, वो 10 में से मेरे 9 आते, उसके 10 में से 2 आते, and इससे you know I get this idea कि यार मैं मार्क्स लेने में एक्सपर्ट था, कोडिंग में No, एक्सपर्ट I नहीं think था. you're like a smart worker than a hard worker. Yeah. perhaps. I feel like I'm more of that as well. Like like I feel like when I look at like the curriculum or of like the topics that I'm supposed to study for like a test or something, what I do is I just navigate. I'm like, okay, these 4 topics are never going to be tested, so I just like avoid those like for all reasons. And then the ones that are potentially going to be tested, I just like study. So I feel like smart work is always that wins the battle. I mean, like True. no offense to like hard workers here, but like राइट, तो अब आपका काफी टाइम हो गया है IBA में, लेट्स टॉक अबाउट आपने इंटर्नशिप्स भी की होगी, जॉब एक्सपीरियंस भी थोड़ा हासिल कर लिया होगा, तो मतलब व्हाट डू यू थिंक जब आप IBA आए, करिकुलम को आपने देखा, करिकुलम को पढ़ा, फिर इंडस्ट्री में जाए, यू हैड दैट एक्सपीरियंस विद यू, मतलब क्या एक्सपीरियंस, हाउ डू यू फील द डिफरेंस इंडस्ट्री में? ये मैं हमारे बारे में सोशल साइंस की तरफ से बहुत बोल सकती हूँ. आई फील लाइक हमारी यहाँ पे जितनी ज़्यादातर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आती है ना, आर वेरी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर. तो लाइक दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ लिमिटेशन हमारे एंड से, बिकॉज वी वांट टू गो इनटू लाइक प्लेसेस व्हिच आर नॉट स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट, फॉर एग्जांपल लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह, या फिर इवन लाइक मीडिया रिलेटेड प्लेसेस, मे बी लाइक एक्चुअल फिल्मिंग के अंदर वगैरह जाना है, या फिर समवेयर लाइक किसी NGO के अंदर वगैरह ना, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज रिलेटिवली लिमिटेड है कंपेयर टू लाइक बिजनेस वगैरह के. ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस स्कूल, सो वी एक्सपेक्ट कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, बट I feel like we are still relatively काफ़ी behind हमारी डिग्री in terms of like internships की opportunities मिलना, हमें खुद जाके ढूंढनी पड़ती है जगह जगह. I remember हम लोग ने me and my batchmates, हम लोग second year के अंदर जाके हम लोगों ने जब लोगों को in person अपनी CV जाके दी थी कि please call us, और फिर उसके बाद हमारी like internships हुई थी. बहुत competitive है. I don't know how it was like आपके टाइम के अंदर, लेकिन अब मैं इतना पुराना नहीं हूँ हर साल बदल रहा है, हर साल yeah, बदल रहा है for culture. sure. हर बंदे के बेल्ट के नीचे they have like 3 internships का minimum. True, ठीक है, true. at least 5 होनी चाहिए, वरना minimum 3. Like it's crazy competitive. Yes. So I was talking to a senior, I think day before yesterday, and the phrase that he used, it's brutal out here. It is. I think that was the phrase he used. I was like, absolutely agreed. So मतलब डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है. मैं CS का थोड़ा एक्सपीरियंस बता देता हूँ. आई थिंक CS वालों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वैसे होती है, क्योंकि आई थिंक हर कंपनी को IT का बंदा चाहिए होता है. Then there is a lot of growth associate में, product manager and then software engineer required. तो I feel हाँ definitely CS वालों के लिए better है, but that does not mean अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है तो you know and but the supply is still limited, I would say. हाँ, true. मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग बिजनेस वाले हैं ना, प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब लेते हैं, हमें बड़ा अफसोस होता था इस बात पर. अच्छा, मुझे लगता है कि CS वाले जो kids, even the ones that are studying at IBA, they're always like they're all freelancing in some way, shape or form, and they're making more money than they would after they get like a formal role that after. just proves कि like degree की वो इतनी like like और worth नहीं, like आपको you don't need to like stay in the field के जिसमें आप पढ़ रहे हैं, like you can always adapt to like multiple different fields. पर ये बड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है डिग्री के हवाले से. व्हाट शी सेड कि यू नो कि मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट IBA डिग्री एज अ जोन, के लोग अक्सर यही आते हैं कि हमें IBA से कोई वो नहीं है, आई जस्ट वांट दिस IBA डिग्री ऑन माय डोरस्टेप. I think you know what, मैं admit करती हूँ, नाम है और ठीक है, फायदा होता है. I've seen LinkedIn पे posts, ठीक है, and I know people personally जो कि who have got into places just because उनका IBA की डिग्री का नाम लगा हुआ था, compared to maybe उनसे कोई और यूनिवर्सिटी का होगा ना, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा इस सालों का, लेकिन वो उसको नहीं मिली अपॉर्चुनिटी because वो IBA का नहीं था, right? So there have been instances like that, and I do think it's a privilege, लेकिन at the end of the day I do think कि relatively जितने भी यहाँ पे कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, प्रोफेसर्स भी ओवरलैप करते हैं. जो हमारे यहाँ के पढ़ाते हैं वो उधर भी जाके पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़ रहे होते हैं. आई फील लाइक रिलेटिवली पढ़ाई के तौर पे द एक्सपीरियंस इज मोर और लेस द सेम अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन
the name is there. I feel like she says the name is there. I'd like to disagree a bit. I feel like the name used to be there. It for sure is in some capacity, but I think it's on the deterioration level. Like it's deteriorated a bit with like time. I feel like what's there pertinent on LinkedIn is the alumni network. I feel like for IBA, that's the strongest. Yes. When you talk I agree. about influential people like Amir Paracha and you know they're CEOs of companies like big MNCs, and then they're IBA graduates. You have finance minister, ex-finance minister Asad हर Umar was. company में कोई So I idea feel तो like होता है. yeah, like and you know, like I feel like this is something that Nadia, like I feel like the single best thing that IBA has offered me so far in my 3 years is Miss Nadia Said. PE sessions. I feel like not PE, this course that I took with her, business communication. So I feel like even the way she mentions about alumni network and how we can use that to our benefit, to make the most out of it. I agree. So, मतलब what do you think PE? You said PE. मुझे अपने स्कूल का याद आ गया. मेरे स्कूल में होता था PE. उसको था practical exercise. Exercise वाला, हाँ. Yeah. नहीं, हमारे यहाँ भी personal effectiveness है. Fancy, So, make it they fancy, basically guys. teach you कि you know like अब job market में आप लोग जा रहे हैं तो अपने आप को like how to present yourself, how to present your CV to like future employers वगैरह. So they bring like अलग-अलग people from different areas, fields के अंदर से, and they just basically talk about what they're looking in an ideal candidate. ठीक है. तो again वही बात internships वाली, हमारे PE के sessions में even though हम लोग अच्छा इंटरेस्टिंग बात, वो PE के सेशंस जो है ना 7 करते हैं डिग्रीज के. सो पूरा 2024 का जो मेरा बैच है, हमारे जो 2 डिग्रीज के साथ होते थे. इट वाज अस सोशल साइंस प्लस कोई इको मैथ भी होता है, इको मैथ वाले होंगे, बीबीए वाले होंगे. ठीक है, इस तरह करके 7 होते हैं. तो उसके अंदर फायदा ये हो रहा, उनका फायदा ये हो रहा था कि जितने भी गेस्ट आ रहे थे सारे कॉर्पोरेट वाले थे. हमारा पता नहीं क्या फायदा हो रहा था, हम सुन रहे थे, अटेंडेंस लगा रहे थे. मतलब ये अटेंडेंस की आपने बात, अटेंडेंस ये मतलब ये बहुत है कि मतलब अब इस अटेंडेंस के क्रेडिट आवर्स नहीं होते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्रेडिट आवर्स होने चाहिए ना, वो अटेंडेंस तो लगा ही रहे. मतलब व्हाट डू यू थिंक मानूर, अगर आपने अभी तक पी लिया नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? No, I actually have taken PE and I feel like the sessions are super resourceful because I said that those are like the live sessions jahan mein, you know, Miss Nadia Said actually brings people from our alumni network who we can have like active conversations with. I feel like for some people, for sure, like I feel like to some degree level it is for sure, and I feel like, I don't know, for some people PE is just attendance, but for me it's actually about personal growth and personal effectiveness. Like I feel like one interesting story that worked for me, I was at a conference and I was having a conversation with the CIO of Engro, and he's a very like reputed like personality. Miss Nadia said she's told us like this one story. She's like, every time you walk into like, you know, you're having a business meeting with someone, you're asked a question, do you need a hot beverage? A lot of times people say no, we don't need a hot beverage. So she's like, or do you need anything? Do you need water? Do you need something of that sort? She's like, always say yes to a hot beverage. The reason for that is that if you say yes to a hot beverage, it buys you time. Like चाय आएगी, ठंडी होगी, आप उसको पिएंगे, it buys you extra 20-25 minutes to like sit there. And if you're like someone who does not, like Miss Nadia said, she's not a coffee drinker, she's not a tea drinker, so she's thought of like a beverage she orders for herself, which is green tea. So she's like, you know, चाय आती है तब ठंडा होने का टाइम लेती है, and then मैं उसको पीती. So you know, like things like that. You learn about interesting stories that have actually like worked for people, and you can actually apply them to your corporate life. And I think that's amazing. I think CV जब तक बना रहे थे, that bit helped हमारा batch too. For Like sure. that's general. But let's come to curriculum, right? तो curriculum जो हमारा topic है, मतलब what do you think? आपने बस societies को बताया, you have worked with psych, you have worked with different, you are part of student government as well. Yeah. तो मतलब how do you think मतलब curriculum के साथ मतलब how do you think societies connect with it? मतलब what do you think about it? Interestingly हमारे पास psychology society थी नहीं, and हमारा curriculum उस वक्त तक, because हम लोग मैं उस वक्त अपने 3rd year के अंदर ही थी, so my colleagues and I we thought कि like हमारा, you know, it can improve हमारा, the way our degree handles psychology, it can improve a bit, and we're like, why not just take it into our hands अगर like ऊपर लोग कोई कर नहीं रहे. So we decided कि चलो psychology society बनाते हैं. So last year we founded this society. ठीक है, we wrote like a very lengthy proposal, जाके उसको approve करवाया, manifesto दिया. ठीक है, and फिर society बन गई, and उसके through पैसे आए वैसे? पैसे आए थे? आए, क्योंकि mental health है, अल्हम्दुलिल्लाह. I mean, interesting. For other people, societies have other benefits and gains in terms of the money that he's talking about. Referring to here, let's not go talk about that. Well, the student government is always skeptical.
turn away from that I feel like- conversation ताकि उसके अंदर जाए I नहीं. feel like वो आप top 3 student का ये CFO and also आप conversation करें. I'm not the ideal person to be having a conversation about that because Same, we don't same. I know. think हमारी CFO would like talk. We don't know where the money is, where it comes, goes, and I don't know. मैं सल्ला. नहीं मतलब let's move on to मतलब anyone who is coming right now to IBA. What's your take on it? मतलब उनको क्या advice दोगे curriculum के हवाले से, what they need to decide before coming in? देखो, I feel like first आओ, but come with like a certain mindset. If you're coming to social sciences, don't, and especially if you're coming to like coming thinking कि अच्छा ठीक है मैं ये major करूँगा और मैं इसमें specialize करूँगा, that won't be the case. You will be introduced to a very diverse degree जिसके अंदर आप बहुत सारे disciplines के बारे में बात कर रहे हैं, and I think that's a good thing. It leaves you with a lot of opportunities कि इस field में चले जाओ, इस field में चले जाओ, ठीक है. So ये नहीं होगा कि एक में आप specialize करोगे and दूसरा mind में आप ये भी रख के आए कि हाँ I'm smart, ठीक है. Don't doubt yourself, but also realize कि other people that you're gonna be surrounded by इस university के अंदर are also smart, ठीक है. Yeah. So you will need to put in effort, like first year से ही. I think that's my take on it. Ma'am? I feel like my take on it would be let's begin from like entrance tests when people are preparing. I feel like that's also very, very important. Give your standardized tests, give the IBA tests, prepare well for interviews. That's very, very important. Once you make it to IBA, I feel like be yourself. It's very, very important. And try to aim for like good teachers during enrollment and Yes. try to fight for the best teachers because that really does affect your GPA at the end of the day. How much ever people say that GPA is just like a number and it's just like a degree is just a piece of paper, like I feel like to some extent it does really matter in the end. So I feel like try to make the most of your IB experience, even if IB is like not the place where you have wanted to come, like it was your second or third preference. Don't shy away from the idea of like just actually making the most of your IB experience because that's really what matters Also like at the end have of the day. fun. Like Yeah, I feel like make- आखिरी अब मेरे 2 सालों के अंदर I'm just like enjoying मेरी like अब जैसा भी assignments हो रहा होता है. Attend पहले 2 साल IB. मैंने लग के पढ़ाई कर ली, अब मैं आराम से सकूँ. I feel like attend IBA events, like more so make friends, just like make memories. Because join I feel like societies. join societies, make memories because that's what's gonna like really Also interact with your professors. Surprisingly, they're very nice to interact with your interact with. seniors as well because I feel like friends तो आपके काम आएंगे ही, हाँ. but जो seniors आपको advice देंगे और आपके Professors काम too, आएंगे हाँ. professionally and professors too with like placements and stuff. It's really gonna benefit you. Right. So towards the end, we have some rapid fire question. Anything that comes to your mind with the term, right? IBA, I'm gonna miss it. Not gonna miss it. IBA curriculum, Okay, Improving. GPA, good है. Myth. ठीक है. IBA teachers, Improving. IBA today. It's a good experience. Honestly, it's a good experience. Alright, so I hope all of you who are watching this episode आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा experience हुआ इनसे मिलने का and got insight about the IBA curriculum as well and I hope you like the episode. मिलते हैं अगले episode में. अल्लाह हाफिज.